दोस्तों आपने PIQ फॉर्म तो भरा ही होगा। अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई इंटरेक्ट विद कैंडिडेट्स, ऐसा लगता है कि कैंडिडेट्स के मन में आता है कि PIQ इज जस्ट ए फॉर्म, इसको बस अच्छा अच्छा लिख के भरना है। वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज PIQ इज योर लाइफ ऑन द पेपर, starting from your date of birth. It has got all details that gives you a in-depth picture about you. So it is not a casual form to be filled. It is your life on paper. और आपको पता है कि PIQ form is available with the psychologist and the interviewing officer. And interviewing officer के लिए this becomes the basis for the beginning of your interview. Before the candidate is called in, he goes through the PIQ, and everything that you write, every line that you write on the PIQ form can be probed by the interviewing officer. Psychologist cannot do it because he or she does not interact, but interviewing officer does, and thereby you are responsible for every entry in the PIQ form, and you will be held responsible for that. You will be held accountable for that. So please take care. Now एक चीज और देखना है कि जो probing होता है interviewing officer करता है, it is not done randomly. There is an order in the process, and how does it do it? इसको समझने के लिए यूं समझ लो जैसे एक प्याज होता है, प्याज का ऊपरी छिलका आवाज करता है, उसमें कोई दम नहीं होता, और प्याज का जो असली एसेंस है दैट इज इनसाइड. सो द इंटरव्यूइंग ऑफिसर प्रोब्स यू लाइक ही इज कटिंग थ्रू एन ऑनियन, छिलका बाय छिलका वो निकाल देगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ व्हाटएवर यू स्पीक, है ना, लेयर बाय लेयर वो आपको पील कर देगा, layer by layer, and the deeper you go the better you perform. It's very simple. Now let me show you what each of these layer represent. For example, the first layer is the issue layer. Issue मतलब वो मुद्दा जिसके ऊपर इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको प्रोब करना चाहता है. उदाहरण के लिए आपने फॉर एग्जांपल 12th और ग्रेजुएशन के बीच में एक साल का गैप ले लिया. सो देयर इज अ गैप इन एजुकेशन, और मे बी इट्स अ ड्रॉप इन योर परफॉर्मेंस और समथिंग वेयर ही फील्स कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा. सो यू राइट इट इन द PIQ फॉर्म, और मे बी यू गिव इट इन द फॉर्म ऑफ योर CIQ रेस्पॉन्स. उस इशू को पकड़ता. सो द लेयर वन इज द इशू. सो इशू को पकड़ के नेक्स्ट ही गोज टू द लेयर टू. एंड व्हाट इज लेयर टू? लेयर टू इज द नरेटिव. ही विल आस्क यू to give one or two incidents from life that explains that particular event or that particular claim that you made. For example, gap. So he'll tell you what happened, why did you take that gap, उस gap में क्या किया, क्या achievement है ना. अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसका रिजल्ट क्या, इज प्रोब. सो नरेटिव इज व्हाट यू गिव, द लाइन, द स्टोरी और द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग दैट गैप. और उसको पकड़ने के बाद देन द थर्ड लेयर इज द प्रोसेस लेयर, कि अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिया उस गैप पीरियड में, हाउ डिड यू प्रिपेयर. तो somebody who has actually done that will know, but somebody who has only made a narrative or a story but without actually going through it, वो हवा में फंस जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मान लो, हाइपोथेटिकली मान लो आप USA नहीं गए हो, USA गए नहीं हो, लेकिन आपने बोल दिया कि सर मैं एक बार USA गया हूँ. ना बोल तो दिया ना, द मोमेंट ही आस्क यू व्हाट वाज द प्रोसेस, वीज़ा कहाँ से लिया, पासपोर्ट कहाँ से बनाया, कितना टाइम लगा, किस एयरपोर्ट में गए, टिकट कितना था. नाउ ही इज गेटिंग इनटू द प्रोसेस. यहाँ पे आप बोल नहीं पाओगे. क्यों? क्योंकि आप एक्चुअली गए नहीं, आपने तो कहानी बनाया. सो झूठ के पाँव नहीं होंगे, आपके अंदर खोखलापन आ जाएगा, प्रोसेस में फंस जाओगे. सो व्हाट एग्जैक्टली डिड यू डू एंड व्हाई, दैट्स अ प्रोसेस, राइट. नाउ द नेक्स्ट लेयर, द फोर्थ लेयर इज द इमोशन. सो व्हेन यू आर डूइंग दिस, what emotions did you face, है ना, what were you feeling at that moment. ये फीलिंग डायमेंशन तभी आएगा जब आप एक्चुअली उस सिचुएशन में उतरोगे या गए हो. अगर आप मान लो आप एक एग्जामिनेशन में फेल हुए हो, तो फेल होने के बाद जो इमोशन महसूस होता है वो फेल होने वाले व्यक्ति को देखकर आप महसूस पूरा नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट पेन अनलेस यू एक्सपीरियंस इट. सो प्रोसेस के बाद इमोशंस आ जाता है. एंड द फिफ्थ लेयर इज द लर्निंग. सो इफ यू मेड ए मिस्टेक, व्हाट आर द लर्निंग. ये रिपीटर्स कैंडिडेट्स के लिए आता है कि आप 3 बार SSB आए हो, what happened, have you introspected. हम बोल तो देते हैं introspected, then he asks how did you do it, process पे आ जाता है, how did you feel it and what are the learning. अब learning तो तब करेंगे ना जब किया है, हम तो coaching के notes रट के गए. So what changed after the learning process becomes very very important. So learning from your mistake. So unless you know how to go layer by layer into it, you will not be able to survive these 4 layers. And probing में हमारा झूठ फंस जाएगा. And person who has actually done it, छोटा छोटा मोटा भी गलती हो गया है, सीख लिया है,
So he can survive through all these 5 layers. So this is the process by which the interviewing officer carries out the probing of the candidate or the PIQ content or your CIQ responses, है ना. आपने देखा होगा CIQ के बाद एक प्रोबिंग वाला फेज आता है. सो CIQ तो आप कुछ भी बोल दोगे लेकिन प्रोबिंग में फंस जाओगे. एंड अनफॉर्चुनेटली इन माय क्लासेस आई फाइंड कि मेनी पीपल दे मेक स्टेटमेंट एंड द मोमेंट प्रोबिंग में जाते हैं वो पहले लेयर में अटक जाते हैं बिकॉज देयर इज नो नैरेटिव, और वहां बैठ के नैरेटिव बना रहा है, कहानियां बना रहा है. एंड देन उसके बाद में द मोमेंट यू पुट हिम इनटू प्रोसेस इट क्रैशेस बिकॉज देयर इज नो ट्रुथ, देयर इज नो सब्सटेंस. So please make sure stories can be prepared, but process cannot be. Process can only be remembered because you've gone through it. You cannot make it sitting inside the IOCA room because you don't know what will he ask. And then emotions जो है वो expose करता है reality को क्योंकि you have lived in, and learning from that shows maturity. If you have only emotions तक बात किया but उसके अंदर learning नहीं है तो you not learn from the क्या बोलते हैं उस मिस्टेक से. सो दैट मीन्स कि आपने इनपुट चेंज नहीं किया, आउटपुट चेंज करने की कोशिश कर रहे हो. सो इमोशंस एक्सपोज रियलिटी, लर्निंग शोज मैच्योरिटी. सो SSB डज नॉट रिजेक्ट वीक एक्सपीरियंस, but SSB definitely will reject shallow understanding of life and experience. So SSB is a subset of life. So you will have to go deeper and do not prepare stories. TAT Ratliya, WAT Ratliya, expert. No, that's a very shallow and very superficial. You will not be able to sustain the layers of probing. Prepare yourself. The beginning of the SSB ka preparation starts from understanding the self. So that's a beginning, and those who wish to go through this process, deep process, introspective process, AFOSOP ka online composite batch is available. You can contact on this number 9090099035, and iske andar absolutely will break your PIQ, and then we will probe your thinking, and we will go deeper and deeper layer by layer, and we will rebuild clarity, confidence and authenticity so that everything that you speak, you are accountable for that and you can take responsibility for that, right? And this is only for serious SSB aspirant, not for candidates who are looking for tips and tricks. Thank you and may God bless you. Thank you very much.